guidance on protected cultivation. Hello. Yeah, I just switch on the recording so I can share that on the YouTube so everybody can get benefit out of this. Did you get the question or should I repeat? No, you have to repeat that. Okay. So where can one find guidance and knowledge on protected cultivation? I'm not sure this only limits itself to hydroponics, but traditional farming as well. So guidance and knowledge on protected cultivation. See, again, it's a more or less the same question. So guidance is see, to ensure a success of your venture, you need to have two things. One is the basic, second is a hands-on experience. So one basic you can gather from these kind of a secondary platform, interacting with those who are already in this business. So that's the way you can learn from others' mistake or others' progress. So मेरे हिसाब से अगर आप बात करो structured learning की, structured learning is not the right way of venturing in agriculture. It is nothing like we are just something going to handle the crop. और वो वही बता पाएगा जो क्रॉप कर रहा है, जो उसमें सपोज पानी अगर कम हो रहा है, जैसे जस्ट समथिंग लाइक 2 hours बैक आई वाज एट अ फार्म, वहां पे गड़बड़ क्या किया है, एक इंस्टॉलेशन हुआ है उसमें जो जहां से पानी का इनलेट होता है वहां पे पानी ज्यादा ड्रॉप गिर रहा है और जहां पे फेक एंड है वहां पानी पहुंच ही नहीं रहा है. So the mistake there is they have not used the PC drippers, so pressure compensatory dripper. So non-pressure compensatory dripper में क्या होता है कि जहां प्रेशर ज्यादा होगा वहां पानी ज्यादा निकलेगा, जहां प्रेशर कम होगा वहां पे पानी कम निकलेगा. So now the plants who are at the fag end of drip irrigation, they are struggling with water, and those who are at the entry level of water in that drip line, they are struggling with the excess water. So again, जब आपको सीखना है, सीखने के लिए हैंड्स ऑन या इस तरीके की चीजें या तो किसी के एक्सपीरियंस है. सपोज आई थिंक हियर some Gulati is there who was in touch with me and he was just asking questions or at every step, and I happily was responding on his question. Sometimes it delayed, but I was taking up that question. So whoever is interested to do that, my vision is to ensure a success of this whole hydroponic venture. I would love to answer the questions. If there is further requirement of any kind of information, I'll definitely ask. And yeah, but yes, we have to ensure a success of this, one of the most efficient growing system. But होता क्या है कि लोग उस टेक्निक को जब नहीं हैंडल कर पाते हैं तो वो ब्लेम करते हैं टेक्निक को कि भाई टेक्निक अच्छी नहीं है. But yes, this is again I'm emphasizing one of the most efficient growing system available for any crop. और लर्निंग, जैसे जैसे आप प्लांट को सिंपल सा देखो, अगर मैं अपनी भाषा में बोलूं, प्लांट से बात करना शुरू कर दो, automatically you will get all the learnings. Yeah. Ranjit, are you ready? Yes, sir. Yes, sir. I'm going to share the screen. Yeah, share that screen. So let's take up this Ranjit one because that has initiated this whole discussion even. Yeah. Yes, sir. Sir, I have a doubt that how much quantity concentrated stock solution A and B we need to add. For example, here it is written 3 liters. So is it total for A plus B, or is it 3 liter A and 3 liter B? See, it's a 3 liter A and 3 liter B. Okay, sir. And sir, does it work? I want to ask you this also, that this app works or not according to your experience. See, it's very simple thing. This all is for achieving some purpose. Yes, sir. ये हाइड्रोबडी के साथ as well as एक और है Ferti Solutions. Yeah, yes, sir. Ferti Solutions is for soil kind of a farming. Mm-hmm. तो उस चीज में जब बात करते हैं
तो ये सबका पर्पस एक ही है, Yes, ठीक sir. है। अगर क्रॉप पे रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है तो देन इट इज गोइंग टू वर्क, Yes, ठीक sir. है। अब यहाँ पे जैसे देखिए आप, ये इतनी डिटेलिंग कौन सा ग्रोअर करेगा बताइए, Yes, sir. कि नाइट्रोजन का नाइट्रेट 165 ppm हो और उसके बाद अमोनिकल 15 ppm हो। हैव यू डन द होल एक्सरसाइज एंड इट इज गिविंग द टारगेट? Sir, actually, I've selected, or Got it, there got are it, got some, it, got it, yeah, got it. And now what is going to happen? Can you just go ahead and do that? Then it is going to give you the resulted ppm. yeah, this. How's the pizza? Hey, Anuj, yeah. So total cost is 6.9 rupees. So it is more or less what we already have. Yeah. ठीक है। सो जो सीट है उसी को इन्होंने उस फॉर्म में डाल दिया है, क्या बोलते हैं इसको, एक 2.03. So it's a kind of a app or kind of a the same thing is being converted here. Okay. And अब sir, इसमें 300 liters 300 ग्राम लिखा हुआ है, तो बट 3 liters में 300 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट ज्यादा नहीं हो जाएगा सर? just a moment, just a moment. Can you ask again the question? Yes sir. Sir, 300 ग्राम लिखा हुआ है इसमें for calcium nitrate in stock solution A. And sir, for 3 liter solution, sir ये over नहीं हो जाएगा 300 ग्राम for 3 liter solution? नहीं, डेफिनेटली हो जाएगा, बट आप पीपीएम देखो ना कितना आ रहा है। आपने कुछ फर्टिलाइजर सेलेक्ट किए थे? हाँ, yes sir, in substance selection. हाँ, सेलेक्ट किया आपने फर्टिलाइजर्स। अब Yes इसकी sir. क्वांटिटी कैसे उसने बताई? क्वांटिटी सर ये एक्चुअली पहले से एडेड है इसमें, लेट्यूस का और ये सब ये ऑलरेडी एडेड है इसमें, तो इसमें से अब आगे आपने सेलेक्ट करके। अब यहाँ पे क्या चाह गया? अब ये हाइड्रोबटी कहाँ का है? आई थिंक फ्रॉम यूएसए, आई थिंक यूएसए का। ठीक है। सो इसने क्या किया है, ये आपका विंटर वाली जो होती है, कूल सीजन जो होता है, वहां पे इसने इसको वर्क किया है, ठीक है। अब आप सबसे पहला मेरा तो जो सवाल होता है कि आई विल नेवर रिकमेंड टू गो फॉर 2.5 EC। हाउएवर हो सकता है कि किसी के प्रोजेक्ट में 2.5 EC काम करे। 99% केसेस में इंडियन सिनेरियो में ये पॉसिबल नहीं है। व्हाई? बिकॉज जो यहाँ पे गर्मी होती है, तो गर्मी में जो इवोपोरेशन रेट होता है, ठीक है, और जब ड्राई होता है तब इवोपोरेशन रेट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और उसमें से जब सॉल्यूशन, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन होता है, अगर वो ट्रांसपिरेशन पौधा ज्यादा कर रहा है तो एब्जॉर्प्शन रूट पानी का ज्यादा करेगी, ठीक है। अब पानी तो ट्रांसपिरेशन से बाहर निकल जाता है, बट कोई सॉल्ट बाहर नहीं निकलता है, ठीक है। एंड अगर आपने 2 EC या 2.5 EC के उस पे अपना फर्टिलाइजर सॉल्यूशन चलाया, तो इट्स मीन यू आर ओवर फीडिंग योर प्लांट, यस सर, ठीक है। एंड वो अगर आप ठंडे क्लाइमेट में बात करें, ठंडे क्लाइमेट में डेफिनेटली पानी कम एब्जॉर्ब होता है, तो आपका कंसंट्रेटेड जो फर्टिलाइजर सॉल्यूशन होता है दैट वर्क बेटर। बट इन आवर इंडियन क्लाइमेट, जहां पे ट्रांसपिरेशन रेट इतना हो जाता है दोपहर में कि आपके पौधे विल्टिंग की स्टेज पे आ जाते हैं, अगर आप उसमें फिर फर्दर शॉक दोगे कि आपने सॉल्ट भी बॉडी के अंदर कर दिया ज्यादा, देन इट इज गोइंग टू किल योर प्लांट। सो ये चीज जो मैंने आपको बोला कि ये सब चीजें अगर एक स्टैंडर्ड है, अनटिल एंड अनलेस आपके प्रोजेक्ट का स्टैंडर्ड नहीं बना है, तो वो वर्क करेगा या नहीं करेगा, आई ऑलवेज हैव अ डाउट। ठीक है। सो वेरी सिंपल थिंग, ये जो आपका मतलब 2.03 है, वो तो डेफिनेटली इज अ हायर साइड फॉर अ लेट्यूस इन इंडियन कंडीशन, जहां पे कि आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। You know, I'm operating at 0.7 and getting a really a good crop. Okay, but sir, actually, I think this is for stock solution. We have to add this in irrigation water. Stock solution का EC नहीं आता बाबा, stock solution का EC कोई नहीं लेता।
ओके ईसी तो आपका केवल उसी का लिया जाएगा जो आपका सॉल्यूशन उसमें चले। इरिगेशन वाटर हम यस ओके एग्जैक्टली। सो देखो स्टॉक सॉल्यूशन जो होता है, एक और बहुत बड़ा सा सभी का क्वेश्चन आता है, गिव मी अ मोमेंट। हाँ यस सर एक और सबका सवाल आता है कि साहब मेरा स्टॉक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन या वॉल्यूम कितना होना चाहिए। यस सर ओके इरिगेटेड बहुत वाटर सारे यस लोग सर पूछते हैं कि भाई मैं 100 लीटर मिलाऊं इसमें, या मैं 200 लीटर पानी में बनाऊं, या 5 लीटर पानी में बनाऊं। ठीक है, दो चीजें, एक अगर ऑटोमेटेड है तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। आप चाहे उसका कंसंट्रेशन 10 गुना बढ़ा दें या 10 गुना डाइल्यूट कर दें, वहां पे सिर्फ इतना होता है कि जब आपका डाइल्यूट कंसंट्रेट स्टॉक सॉल्यूशन होगा, आपकी मशीन को ज्यादा सॉल्यूशन पोर करना होगा फॉर इंक्रीजिंग 0.1 ईसी। अगर वो कंसंट्रेटेड होगा, आपकी मशीन को सिंपली थोड़ा कम करना होगा। सो स्टॉक सॉल्यूशन जो होता है उसका वॉल्यूम कभी भी मायने नहीं करता है, एक्सेप्ट कुछ मशीनें या कुछ इरिगेशन सिस्टम ऐसे हैं जो कि वॉल्यूमेट्रिक बेसिस होती है कि अगर इतना पानी खींचेगा तो इतना वॉल्यूम आपका वो सक करेगा, देन वहां पे कंसंट्रेशन वैल्यू करती है। बट 99% केसेस में जहां पे सीधे आपके उस जो रिसर्कुलेटिंग पानी है उसके ईसी को मेंटेन करना होता है, तो स्टॉक सॉल्यूशन कितना कंसंट्रेटेड है इट डजंट मैटर, इसका कहीं पे इंपैक्ट नहीं होता है। द ओनली थिंग इज आपको इंश्योर करना है, मैन्युअली कर रहे हो तो इक्वल वॉल्यूम दोनों स्टॉक सॉल्यूशन टैंक से लेना है। अगर मशीन कर रही है यू हैव टू इंश्योर कि वो पोरिंग इक्वल वॉल्यूम में हो रही है। ठीक है, यस सर या Sir, I have a question, something Yeah, like similar to this. If it's possible, can we go on to like the main page where it says? Yeah. So, यहाँ पे when we see there is this range of targeted concentration in terms of ppm, right? So my question is, how do we get these ranges, or how do we define that? Suppose nitrogen in ammonical form has to be like what 15 ppm. How do we come on to this part? Tushar, you have to be in this growing business or as a grower for a long time, then only you can realize that how this whole thing is impacting the crop. It is not that easy. अगर वही easy होता तो आज फर्टिलाइजर रेसिपी हर एक आदमी बना लेता। Are you getting what I am saying, Tushar? Yeah. It is a matter of experience. You have to, that's how, if you see at the beginning only I said, you have to establish your own crop production protocol, and nobody else except your plant is going to tell you that you are in the right direction or not. Got it. Okay, very simple. हाइड्रोपोनिक का बेनिफिट ही यही है, आज जो आप करेंगे अगले 24 आवर्स के अंदर आपका प्लांट आपको बता देगा कि यू आर डूइंग गुड और बैड विद हिम. So that's the uniqueness of hydroponics, as well as you as a grower have 100% control on your plant. आपको प्लांट को जल्दी से ग्रो कराना है, वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ानी है, या फ्रूटिंग डालनी है, या आपको क्या कहते हैं कुछ किसी स्ट्रेस में डालना है पौधे को. So all these things can easily be done by the grower, but only thing is you need to have a little experience on that. Okay, Tushar? Yeah, okay, got it. Thank you. Yeah. Yeah, so we can move on to the next question, right? Yeah, I think Ranjit, you are satisfied with the kind of answers. yes sir sure sir. Yeah. Sir, I want to ask one thing also. Question? Yeah, yes sir. So actually I just write blogs related to hydroponics, so I wrote about this also in this Hydroponic app. So I am halfway in that blog article. So can I do full and publish for will it work for our Indian audience or not?
I want to ask you that. Definitely, yes, but you have to see, it is nothing like you can mention the right thing. Yeah, yeah. Simple thing is reference values are from some areas where we are not growing. Yeah, Okay. yeah, yeah. Tool is really good, but you can take it as a benchmark and try to study how your crop is behaving. I'm not saying that you Yeah, should not use Hydroponic. You yeah, use yeah. it and just Okay. see that how this crop is behaving. This is a good Yeah, tool. And the yeah, same yeah. way, We if can you, experiment with this. Yeah. yeah, it is almost the same thing what I used to give, but only thing is in my Excel sheet, the fertilizer recipe designing sheet, Yeah. the grower have a freedom to choose what should be my ppm level, what should be my grammage level, how it is going to impact. मेरा कहना सिंपल सा होता है कि भाई आपका जो भी बेंचमार्क मिले, जैसे इसमें इन्होंने बताया 2 EC होना चाहिए, ठीक है, स्टार्ट विथ लेस, मच लेस, ठीक है, आप 0.5 0.6 से शुरू करो, आप उसको ग्रेजुअली बढ़ाते जाओ, आपको अपने आप दिख जाएगा कि पौधे में the plants are giving you a result or your fertilizer increase is just a wastage. Yeah. So that's the way one need to develop their own crop production protocol. If I talk about protocol, means how to grow your crop. Yeah. Okay, so you go ahead and write it. Okay, sir. Thank you, sir. Yeah. Thank you, Ranjit. At least you become something like a point from where after a long gap, I just initiated this, and yeah, Sameed also supported us, and we all are here to discuss and to reach a common goal, ensuring success of every hydroponic project. Yes. Thank you, Ranjit. Thank you, sir. It means a lot to us. Yeah. Yeah. So the next question is regarding the commercial side of hydroponics. Yeah. So what critical factors that we need to consider? Say, what should be the minimum farm size? How can we go about selecting a crop? What are the potential market segments that we can target? And is there any scope for funding from investors in hydroponics? That is the question. So, अगर मैं बात करूं कि साइज क्या होना चाहिए या कैसे आगे बढ़ना चाहिए और is there a funding available? So for a funding available, if you reach to a level of POC, means proof of your concept, everybody is there to fund you. Okay, it's very simple industry for getting a fund. You have to create attraction and people will come to you instead of people, means you have to go to people and knock that I need a fund. Okay, so coming back to the first question, that what should be the size and how one can decide a crop and how one can target the market. So if you go on one of my video where I have mentioned that SOP for starting a new hydroponic project. So there I have categorically mentioned the project I'll not say yes, must start from the market. And definitely, if you are planning to go for any kind of a hydroponic project, you are sure that what is the market you are going to cater, whether it is Delhi or wherever is its nearest market. Visit that market, try to understand the market demand and zero down to 2 or 3 or maybe maximum 5 crops. That see, according to me, these are the crops which I can easily sell in the market. And always take a farm gate price, not the retail price. Because that is something like a mistake everybody is doing. They are considering as a sales cost as a retail cost. But there is almost 100% difference between the farm gate price and the retail price. If the retail price is 40 rupees, the farm gate price is going to be somewhere around 20 rupees. So your financials need to be that way. And if you feel like, yes, I can realize the better premium price by doing the product innovation, which is, if
I'm sorry to say, but in agri output industry, this product innovation is a missing link. 99% of the growers are selling commodity. So commodity के फार्म में भाई हम एक अगर हम अपना प्रोड्यूस बेचना चाह रहे हैं और सोच रहे हैं हम हाइड्रोपोनिक लगा के वहां तक पहुंचना चाह रहे हैं, so that is a little challenging. So your whole effort is going to how I can enhance the productivity per meter square area का productivity कैसे बढ़ाएं जिससे मैं 10 रुपए की भी अगर बेचता हूं तो मुझे ज्यादा अच्छा रिटर्न मिल सके. That is the one option. Second option is, yes, I will understand the customer's expectation and I'll convert my agri output into a product which is going to satisfy the customer's need. Then as a customer, I would also be happy to pay you premium. और अगर आप लेट्यूस उगा रहे हो और सिर्फ लेट्यूस लेके जा रहे हो बेचने बाजार में, एंड ठंड में सबसे ज्यादा स्ट्रगल होती है बिकॉज ओपन फार्मिंग का भी लेट्यूस आपसे कंपीट करता है. सो उस केस में अगर आप सोच के चल रहे हैं तो आई वुड नॉट सजेस्ट टू गो फॉर इवन इन्वेस्टिंग सच अ हाई कॉस्ट इन हाइड्रोपोनिक प्रोजेक्ट. So any venture or any investor who want to venture in hydroponics need to start what product he want to sell in the market. And उसी के बेसिस पे बैकवर्ड इंजीनियरिंग करके कि साहब ये प्रोडक्ट बनाना है, ये 4 क्रॉप्स हमारी होंगी और इन 4 क्रॉप को करने के लिए ये माइक्रो क्लाइमेट होगा, इस माइक्रो क्लाइमेट को क्रिएट करने के लिए ये मेरा स्ट्रक्चर होना चाहिए एंड ये मेरा ग्रोइंग सिस्टम होना चाहिए. एंड आफ्टर दैट यू हैव टू गो फॉर अ पायलट प्रोजेक्ट एंड देन एस्टैब्लिश एवरीथिंग एंड मूव फॉरवर्ड फॉर द कमर्शियल वेंचर. बट हियर वन मोर थिंग, द क्वेश्चन, I think one more question was there. The minimum size. Minimum size, yes, exactly. Yes. Pilot project always ऐसा होना चाहिए जो कि आप easily market में बेच सके. So size कोई स्टैंडर्ड साइज नहीं है कि जैसे बोलते हैं एग्रीकल्चर में केवीके वाले कि भाई आपका जो इकोनॉमिकली वायबल मॉडल है वो 5 हेक्टेयर से कम का नहीं होना चाहिए. देयर इज नथिंग लाइक दैट. ऑलवेज मूव स्लो एज पर योर मार्केट डिमांड. सो सपोज आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस बेटर. You feel like कि भाई I can be able to sell 50 kg capsicum every day. Now your working need to be कि भाई मेरा एक प्लांट जो है 5 kg का अगर कैप्सिकम देता है तो मुझे कितने प्लांट लगाने होंगे जिससे कि मैं आपका 3 महीने या 4 महीने तक लगातार 50 kg का कैप्सिकम हार्वेस्ट कर सकूं. And that is going to be your size of a project. अगर कोई ये कहता है कि नहीं जी इतना बड़ा प्रोजेक्ट होगा तभी वाइबल होगा, it is according to me is not the right way of heading towards this type of venture. क्योंकि एक तो है कि ओवरहेड कॉस्ट आपकी कहीं ना कहीं पेन देगी, बट उस ओवरहेड की कॉस्ट को आप पायलट प्रोजेक्ट में एब्जॉर्ब करो. बट जब आप कमर्शियली जाओ तो जितना आप बेच सकते हो उतना बड़ा ही आपको प्रोजेक्ट लगाना चाहिए. या Regarding market, I have a follow-up question. So what market segments can one target? Say there is retail grocery chains, then restaurants, then directly retail. So what can be the potential major market for hydroponics, which can give us a good premium price as well to obtain that sustainable profits for the company? See, again, यहाँ पे जो बात मैंने बोली कि प्रोडक्ट इनोवेशन, सो यू हैव टू डू समथिंग. रंजीत, you can stop sharing the screen so we all will okay be okay yeah. So yeah, coming back to that question कि भाई मार्केट सेगमेंट कैसे डिसाइड करें. अल्टीमेटली अगर हाइड्रोपोनिक्स में आप जा रहे हो तो हाइड्रोपोनिक्स में यू आर गोइंग टू गो फॉर अ प्रीमियम प्रोडक्ट्स ओनली.
ठीक है। अब आप अगर देखें तो प्रीमियम प्रोडक्ट में B2B में बहुत छोटा सा सेगमेंट है जो कि आपकी क्वालिटी को एप्रिसिएट करके उसका प्राइस देता है। B2B में कौन आता है? B2B में होरेका आता है, होटल इंडस्ट्री। B2B में आपके ऑर्गेनाइज रिटेलर्स आते हैं, ठीक है, और मे बी सम कैटरर्स और कैफेटेरिया, ये B2B में आते हैं, ठीक है। अब अगर आप देखिए एज अ प्रोड्यूसर, आपका कॉस्ट 10 रुपए प्रोड्यूस करने का है, आपने बोला कि साहब मैं 40 रुपए के नीचे नहीं दे सकता, ठीक है। सो व्हाट द रिटेलर्स आर गोइंग टू डू, मे बी दे आर गोइंग टू पुट 80 रुपीज ऑन योर प्राइस, ठीक है। अब वो 80 रुपए में नहीं बिकता है तो घाटा आपका, बट बिक जाता है तो उसका प्रॉफिट है। सो अगर मैं नट सेल में बोलूं, सो अल्टीमेटली B2C is the solution for hydroponic produce, but B2C वही कर सकता है जिसके पास कैपेक्स हो, कैपिटल हो, जो कि सस्टेन कर सकता है बिजनेस को लॉन्ग रन में। सो द सेकेंड ऑप्शन जो आता है हर एक ग्रोवर के लिए कि भाई मेरे को ये देखना है कि मैं अपने ग्रोइंग जोन को कितना एफिशिएंटली यूटिलाइज करता हूं, कि मैं उस 1 मीटर स्क्वायर एरिया में 4 क्रॉप लेता हूं, 5 क्रॉप लेता हूं, 6 क्रॉप लेता हूं, 10 किलो निकालता हूं, 20 किलो निकालता हूं या 100 किलो निकालता हूं। सो ऑप्शन लेफ्ट विथ मोस्ट ऑफ द ग्रोवर्स जो कि छोटे लेवल पे करते हैं, उनका यही होता है कि हाउ कैन आई प्रोड्यूस मोर पर यूनिट एरिया, एंड उससे अगर 10 रुपए में भी मुझे मंडी में भी जाके कंपीट करना पड़े तो भी मैं कर सकूं। बाकी मोटा मोटा everybody is looking for something like a good return, so they will continue putting their effort कि भाई होरेका में किसी को हम कन्विंस करके उसको ज्यादा प्राइस में लेके आए। बट यस, आपका टारगेट आज 90% केसेस में मुझे यही लगता है, दिस इज बेस्ड ऑन माय ओन एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग, कि भाई आपका साल का रिटर्न 1 मीटर स्क्वायर एरिया में दिखो। इफ इट इज प्रॉफिटेबल देन ओनली यू शुड जंप इन दिस। अगर वो प्रॉफिटेबल नहीं है, मंडी रेट पे ही आप कैलकुलेट करो। अगर आपने बेटर बेच लिया तो वो तो आपके सरप्लस हो गया। अगर आप सिंपल सा ही क्रॉप लो, स्पिनिच, ठीक है, 10 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए, 8 रुपए ठंड में बिकता है, गर्मी में अच्छा खासा महंगा बिकता है। आप ये देखो कि मैं कितनी बार हार्वेस्ट कर सकता हूं पालक को, कितनी साइकिल्स ले सकता हूं। ठंड में अगर आप देखो तो समथिंग ऑफ अराउंड 25 दिन में सीड से जब ट्रांसप्लांट या सीडिंग करके भी 25 से 30 दिन में तैयार हो जाती है। आप हार्वेस्ट करते हो 7 से 8 कटिंग दे देती है, और 15 डेज में पहला आपका 30 दिन लगा, दूसरा 15 दिन का लगा, तो 7 से 8 कटिंग ठंड में दे देती है। जाड़े में, गर्मी में भी अगर आप करते हो अंडर कंट्रोल कंडीशन, इट इज गोइंग टू गिव यू एटलीस्ट 2 to 3 कटिंग्स। सो पहला वाला जो होगा वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, जैसे उसमें मैंने 25 बोला था, तो इसमें हो सकता है 35 दिन का हो, बट उसके बाद वो 20 दिन में आपका सेकेंड हार्वेस्ट भी आ जाएगा इफ यू आर डूइंग इन अ प्रॉपर वे। जस्ट इमेजिन कि आपका कितना पर मीटर स्क्वायर एरिया में पालक लेके आओगे, और अगर 10 रुपए का भी बेचते हो, you are going to be in profit. So 90% cases में this model is going to work, but yes, those who have a sufficient capital for sustaining a business for a long term, then only they should venture in brand building. B2C is a delivering your own brand. ठीक है? So that's the way one should look for. Okay, a follow-up question on demand and supply. So is there any method or any way that you follow to analyze the demand and supply of produce in market? Because as far as we can see, there are lots of ups and downs in the demand and supply as well, because of which there's a lot of price fluctuation that happens. So sometimes it goes at a complete really great higher price, but at sometimes it is as low as it can be. उस पे ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। जब हम उसको तभी परेशान होने की जरूरत पड़ती है जब हमने ले लिया होगा कि जी हम पालक को जो है 200 रुपए की बेचेंगे पर केजी,
या 1000 रुपए की बेचेंगे, तब आपको वो इम्पैक्ट करेगा। जब आपने कहा कि नहीं जी मैं, मेरा तो एवरेज प्राइस 25 रुपए का है, मैं हाइड्रोपोनिक कर रहा हूं, मैं इससे ज्यादा का नहीं बेचूंगा, ठीक है, देन आपको बहुत ज्यादा सा इम्पैक्ट नहीं होगा, ठीक है। सो मेरा जो सजेशन है सभी को कि वर्किंग करते समय डू एट समथिंग लाइक अ वेरी वेरी मिनिमल प्राइस एंड ट्राई टू ऑप्टिमाइज द कॉस्ट एंड प्रोडक्शन, कि आपका कॉस्ट भी कम हो और प्रोडक्शन भी ज्यादा हो, एंड दैट्स द वे यू कैन इकोनॉमिकली अचीव व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। ओके, Okay. So the next question is, it's actually a good question. So can hydroponically grown vegetables and fruits be termed as organic? And if not, like how is it different? I mean, because there is this question comes up a lot. very often, very often. This is a favorite question for me. Okay, so before answering that question, I like to just something like throw some light at how this organic farming evolved. ये ऑर्गेनिक फार्मिंग जो हुई है वो आई कहां से? सो अगर मैं इस चीज को देखूं तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट आया है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का कॉन्सेप्ट आया है वहां से जहां आपका कमर्शियल फार्मिंग और इंटेंसिव एग्रीकल्चर का शुरुआत हुआ है। सो जब इंटेंसिव एग्रीकल्चर का मतलब लगातार बहुत ज्यादा एक ही प्लॉट पे बहुत ज्यादा क्रॉप लेना इज एन इंटेंसिव क्रॉप। सो वहां पे क्या हुआ कि जो न्यूट्रिएंट बास्केट था मिट्टी में, वो न्यूट्रिएंट बास्केट तो कॉमन है, कांस्टेंट है। जब ज्यादा फसल लिया किसानों ने तो उसमें क्या हुआ कि इम्बैलेंस होना शुरू हुआ, एंड मेजरली द माइक्रोन्यूट्रिएंट इम्बैलेंस शुरू हुआ, एंड दैट जो माइक्रोन्यूट्रिएंट का डेफिशिएंसी हुआ प्लांट में वो ह्यूमन फूड चेन में आया। एंड वेरी यूनिक एग्जांपल, जिंक डेफिशिएंसी इन अफ्रीका, इफ यू विल जस्ट स्काउट ऑन अ गूगल यू विल गेट दैट कि जिंक की डेफिशिएंसी वहां की मिट्टी में थी, वही डेफिशिएंसी आपके क्रॉप में आई और वही क्रॉप से फिर ह्यूमन बीइंग में आई, एंड दैट इज कन्वर्टेड इनटू अ डिजीज। सो एज अ सॉल्यूशन, so smart guys are everywhere, and in all the generation there was a smart people. So उन्होंने क्या सोचा कि भाई अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूं प्लांट सोर्सेस से, क्योंकि जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आता है वो प्लांट सोर्सेस से ही आता है, और प्लांट में ऑल द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल बिकॉज वो प्लांट की बॉडी में होते हैं। तो जैसे ही हम ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट आप वहां की मिट्टी में वो न्यूट्रिएंट डाल रहे हो जो कि डेफिशिएंट था सॉइल में। सो यू आर क्रिएटिंग अ बैलेंस बिटवीन द ऑल न्यूट्रिएंट्स, एंड दैट्स हाउ ऑर्गेनिक में आपका एंट्री हुआ, और उसमें प्रोडक्शन, द प्रोडक्ट क्वालिटी हैज गॉन अप। क्यों? क्योंकि वहां पे डेफिशिएंसी है ही नहीं है, आपने ऑर्गेनिक से यूज किया। फिर उसको फर्दर लोगों की हेल्थ पे जो एग्रोकेमिकल का इंपैक्ट हो रहा था, लोगों ने वहां पे भी किया कि भाई हार्मफुल एग्रोकेमिकल नहीं यूज करना है, एंड दैट्स हाउ दिस ऑर्गेनिक फार्मिंग कम्स इन पिक्चर। अब जो सवाल आता है, और अल्टीमेटली क्या था कि इसको प्रिसाइज या बैलेंस न्यूट्रिशन की बात से ये पूरा ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू हुआ। अब जब हाइड्रोपोनिक की बात करते हैं हम, तो हाइड्रोपोनिक की बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपका जो न्यूट्रिशन होना चाहिए वो प्रिसाइज होना चाहिए एंड द बैलेंस होना चाहिए। और जब वो बेसिक प्रेमाइसेस है हाइड्रोपोनिक्स की, सो there is absolutely same what the organic is doing, what the hydroponic is doing. That's how in Europe even this hydroponic is considered as an organic, but in India still people are debating that whether it is organic or not. So having said that, what I'll suggest, don't indulge in this organic or inorganic. Produce healthy food for your population. और हेल्दी फूड तभी आता है जब बैलेंस न्यूट्रिशन होता है, जब हार्मफुल केमिकल का सही इस्तेमाल होता है। आई एम अगेन सेइंग सही इस्तेमाल होता है। आई एम नॉट सेइंग कि मींस
दिस एग्रोकेमिकल इज हार्मफुल और एग्रोकेमिकल को यूज नहीं करना चाहिए, ऑफ कोर्स नहीं करना चाहिए अगर आप गलत तरीके से कर रहे हैं, बट अगर सही तरीके से कर रहे हो तो दैट इज द नीड ऑफ अ फार्मर. A very unique example in India is the grape is one of the highly exported commodity or fruit from India. And you know, maximum pesticide भी use होता है उसमें, but the farmer who are a grape grower, they know the basics of that agrochemical. They know each and everything कि इतना ppm होना चाहिए, ये केमिकल का इतना रेजिड्यू साइकिल है, मेरा जो है 25 तारीख को मेरा कंसाइनमेंट जाना है, आज 10 तारीख है, 5 दिन का रेजिड्यू साइकिल है, मैं ये वाला यूज करूंगा जिससे मेरी क्रॉप को डैमेज ना हो. So, to answer to your question, don't indulge in this organic and inorganic. Very simple way, produce healthy, which is ultimately going to support the surrounding to ensure the health. Yeah. Okay. So next question is regarding nutrients. So there are a lot of growth accelerators, growth promoters present, right? Where during the germination stage or in the later stages as well. So if using them in hydroponics along with the nutrients, would that still be safe, and does it have any other implications on the crops? Yeah. Okay. See, एक चीज बहुत क्लियर है मेरा, फाइल इन द मीटिंग, जो बात कर रहे हैं हम लोग बायो स्टिमुलेटर्स, माइक्रोबियल और बायो फर्टिलाइजर्स और ऑल दीज थिंग्स, वी नीड टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट. अभी कल ही मैं आज ही गया था, यस आज गया था, और हाइड्रोपोनिक्स में वहां पे क्या हो रहा है कि दे आर यूजिंग ट्राइकोडर्मा. ठीक है, अब ट्राइकोडर्मा इज अ फंगस. कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिना खाने के जिंदा नहीं रह सकता, और उसका खाना क्या है? ऑर्गेनिक मैटर. और हाइड्रोपोनिक्स में वो ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता है, बिकॉज एक में तो सिर्फ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन होता है, दूसरे में क्या होता है? इनर्ट ग्रोइंग मीडिया विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय द माइक्रोब्स. So I think I have given answer to your question, and very simple thing कि भाई जब तक किसी भी माइक्रोब के लिए खाना नहीं होगा तब तक वो मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा, और जब मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा जो उसका बेनिफिट होना चाहिए वो बेनिफिट नहीं दे पाएगा. That is for the microbes. Coming back to your the growth promoters and all. अगर मैं देखूं बेसिकली, जैसे ह्यूमिक एसिड होती है, जैसे आपके फॉलिक एसिड होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, इनका जो एक्शन है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ दे इंश्योर अ बेटर ग्रोथ इन सॉइल. सॉइल में अगर आप देखो तो लॉट ऑफ मींस लॉसेस ऑफ फर्टिलाइजर, न्यूट्रिएंट के लॉसेस बहुत तरीके से होते हैं. दैट्स हाउ अगर देखो तो यूरिया एंड डीएपी एंड का जो फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी है वो 10 से लेके 25% है, और माइक्रोन्यूट्रिएंट की 5 से 10% है. सो इट्स मीन कि जो भी आप फर्टिलाइजर अप्लाई करते हो उसका 5% ही आपकी क्रॉप को मिलता है, बाकी वेस्ट हो जाता है. ओके, सो सॉइल में दीज टाइप ऑफ जो प्रोडक्ट्स हैं, ह्यूमिक एसिड एंड फल्विक एसिड एंड ऑल, ये कैसे काम करते हैं? इनका काम करने का तरीका क्या है कि दे आर अ लॉन्ग चेन पॉलीमर, और ये अपने आप में न्यूट्रिएंट को बांध के रख लेता है मिट्टी में, और धीरे धीरे रिलीज करता है क्रॉप की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, एंड लॉस को मिनिमाइज करता है. दैट्स हाउ मिट्टी में अच्छा परफॉर्म करता है. एंड माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, आई ट्राइड बायोवीटा व्हिच इज सीवीड एक्सट्रैक्ट, and very next day I was forced to drain out the complete fertilizer solution. That is my experience. I don't know about others, but yeah, I never recommend these things to be used in hydroponics. Yes. Yeah.
So the next question is actually, which you have already answered. How can we prepare nutrient solutions? So it comes with experience. But the follow-up question to is, since there are around 15, 16 elements, right, which go into making of the nutrients. So where can one, find some, cost-effective suppliers for those if they want to make their own nutrient recipes? इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. बहुत सारे फर्टिलाइजर के जो वो होते हैं ना एग्री इनपुट सेलर्स, जिनको कि मैं बड़ी टिपिकल भाषा में बोलता हूँ लाला जी, कि जो खेती बाड़ी का सब सामान बेचते हैं वो जनरली ये लाला जी होते हैं एंड यही नॉलेज प्रोवाइडर हैं. अगर आप देखो तो इट्स समथिंग लाइक हार्ड रियलिटी, but 90% knowledge to farmer is going from those guys who are selling their produce and focusing on their profitability, not on the ground. So आपको जो ये fertilizers हैं, अगर आप देखो, maybe I can just something like project fertilizer recipe sheet. So you guys will see that these fertilizers are very easily available in any agri input shop. तो जहां पे आपका किसी भी शॉप पे आप जाओगे, यू कैन गेट दैट, बट ओनली थिंग इज कि कुछ छोटी क्वांटिटी मिलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है. soon that problem will also be resolved because good number of companies are working on it. So अगर आप इस वाली शीट में देखो, आपको there are only few fertilizers, ठीक है, इन्हीं को आपको खरीदना है बाजार से. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको उसमें जब कभी भी खरीदोगे एक स्टैब्लिश ब्रांड खरीदिए. जैसे यारा हो गया, जैसे इफ्को हो गया, जैसे क्रिफ्को हो गया, चाहे चंबल हो गया, एरिज एग्रोवेट हो गया. दीज आर सम स्टैब्लिश ब्रांड, बिकॉज इसमें अपना थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है, जबकि अगर देखा जाए तो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर FCO इज फॉर दैट पर्पज ओनली कि मिनिमम जो आपका रेशियो होता है, मिनिमम न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है, उसको मेंटेन करने के लिए ही फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर है. बट जो थोड़ी छोटी कंपनियां होती हैं उसमें रिस्क होता है. एंड यहाँ हाइड्रोपोनिक्स में प्रिसीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो यू कैन एज अ ग्रोवर यू कैन नॉट हैव अ लिबर्टी टू take that kind of option. So that's how whenever you are buying, you should go for a standard fertilizer brands. And even if nowadays even IFCO has made an online purchase options, so there are fertilizers which you can directly buy online. And it is good that now fertilizer companies are also looking for a small kind of packets, the packs. So yeah, that's the way you can just look for these fertilizers. Yes. So in case of grow bags or truck bed system that we use for fruity crops, what should be the ideal discharge rate, from the drippers that should go into those the growing media? See, discharge rate जो आपका just I wanted to get a little clarification. So it is something like a dripper or the total volume? Correct. Drippers में से per dripper क्या discharge ideal discharge rate होना चाहिए, suitable conducive for the crop growth? Correct. See, जो ड्रिपर का काम है, थोड़ा और पीछे जाते हैं. जो इरिगेशन का पर्पस है, इरिगेशन का पर्पस एक है कि भाई आपका जो हाइड्रोपोनिक की डेफिनेशन जो मैं कहता हूं बेसिकली कि व्हाट इज हाइड्रोपोनिक. हाइड्रोपोनिक इज अ टेक्निक which enables the grower to create a better microclimate around the root zone. So hydroponic वही है. और ये better microclimate around the root zone is what? सही हवा, सही पानी, सही खाना, सही temperature. These are the only 4 things which you need to maintain. So now coming to your question कि भाई ड्रिप इरिगेशन का क्या वॉल्यूम होना चाहिए जिससे कि ड्रिपर आपका पानी डिस्चार्ज कर रहा है. The thumb rule is less more frequent.
उसका डिस्चार्ज कैपेसिटी कम हो और कई छोटे छोटे अंतराल में आप अगर पानी देते हैं, सो दैट इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग योर हाइड्रोपोनिक्स. व्हाई सो? बिकॉज जो आइडियल माइक्रो क्लाइमेट क्रिएट करने की जो आपकी रिक्वायरमेंट है, उसमें 50% हवा होनी चाहिए और 50% वाटर होना चाहिए आपके ग्रोइंग मीडिया में. अगर आप कोकोपीट में ग्रो कर रहे हो या किसी में ग्रो कर रहे हो, तो उसमें आधी हवा होनी चाहिए और आधा पानी होना चाहिए. जैसे ही आपका इरिगेशन जस्ट डिस्चार्ज कैपेसिटी अगर ज्यादा हो गई, तो उसमें दो चीजें होती हैं. एक तो पानी ज्यादा चला जाता है, तो इट रिप्लेसेस द एयर. दूसरा क्या होता है कि हाइड्रोपोनिक के उसमें ही एक कैपिलरी बन जाती है. अगर कोकोपीट में देखिए, आप कभी भी देखिएगा कि आप लगातार थोड़े लंबे टाइम के लिए आप पानी चलाइए, आपका नीचे जमीन पूरा गीला हो जाएगा और कोकोपीट नहीं गीला होगा. व्हाई? बिकॉज होता क्या है कि वो कैपिलरी बन जाती है और उसी रास्ते से पानी बहता जाता है. इसीलिए जब कभी भी आप इरिगेशन प्लान करते हैं, तो आपका वॉल्यूम कम होना चाहिए, ड्यूरेशन ज्यादा होना चाहिए. सो छोटे छोटे साइकिल्स में अगर आप देंगे, तो वो परकोलेट या लीच नहीं होगा, वो उसी कोकोपीट के जो पोर्स है उसमें जाके एब्सॉर्ब होता होगा. सो थंब रूल इज more cycles with a less quantity. So discharge capacity should always be or towards lower side. ज्यादा discharge capacity का नहीं लेना चाहिए इस पर. Yeah. Next question is regarding the again A tank, B tank nutrients. So say someone is manually handling the system. तो एक specific X liters का एक tank है. तो how can we determine कि A tank का जो nitrate solution है, how much of that should go into it, and B tank का कितना जाना चाहिए? Should it be like equal or should it be different? Absolutely equal volume. ये बेसिक है, इक्वल वॉल्यूम ए और बी से, क्योंकि वो रेशियो आपने बनाया है. इक्वल वॉल्यूम नहीं डालेंगे तो वो रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगा. एंड फर्टिलाइजर रेसिपी में जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द रेशियो. यहाँ पे जो रेशियोज आ रहे हैं, आप अगर देखेंगे तो दिस रेशियो इज द इंपॉर्टेंट थिंग. जो परसेंटेज और जो रेशियोज आपके हर एक न्यूट्रिएंट के आ रहे हैं, और सपोज आपने टैंक ए वाले को आपने ज्यादा पानी निकाल दिया और टैंक बी वाले को कम पानी निकाला, तो वो गड़बड़ हो जाएगा ना भाई. अगर आप इसमें से 100 लीटर 1 लीटर निकाल रहे हैं और इसमें से आधा लीटर निकाल रहे हैं, तो ये 50% जा रहा है, ये 100% जा रहा है. आपका पूरा पर्पस ही मींस इट्स गोइंग वेस्ट, क्योंकि अल्टीमेटली आपने रेशियो ही चेंज कर दिया. तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं. जब कभी भी आप करेंगे, दोनों ए एंड बी स्टॉक सॉल्यूशन से इक्वल वॉल्यूम डालेंगे. ठीक है. The next questions are now on crops. So this first question is regarding vertical towers or aero towers. So the question is, which type of crops grow actually better on vertical towers and why? I mean, बहुत सिंपल सा चीज है. वर्टिकल टावर पे जो छोटी हाइट वाले होते हैं वही क्रॉप हो सकती है. बेसिकली लीफी वेजिटेबल्स आर डूइंग गुड इन द वर्टिकल टावर्स, एंड वर्टिकल टावर्स में अनटिल एंड अनलेस आपने सफिशिएंट काइंड ऑफ उसका ग्रोइंग मीडिया सही से नहीं किया, मोस्ट ऑफ दीज वाइन एंड लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स स्ट्रगल टू get the sufficient oxygen for a better root development in any only nutrient solution वाले mixture उसमें system में. ठीक है. So can herbs as well grow better? Absolutely. Perfect. Compared to flatbed is like no. अगर मैं बात करूं तो अगर देखो किसी को घर में लगाना है, if anybody wants to have at a home a small unit for their home consumption, home purpose, then the tower, A-frame, other these type of things are good. But once you are going for a commercial scale, I would always recommend to go for a flat bed. Okay? Never go for an A-frame or a vertical tower or anything for the commercial production. Okay? Otherwise, what is going to happen?
your 90% focus will be on the maintenance of the system instead of the growing the crop. It attracts a lot of maintenance and you lose your focus. You will be busy with the maintaining your system. So that's my understanding and that's my experience out of whatever 10, 12 years I have been in this industry. Yeah. So I had a follow-up question. Sorry to interrupt, Tushar here again. Yeah, Tushar. So, sir, in a vertical kind of system, I have seen a lot of people doing turmeric or a lot of projects of turmeric which are being projected, right? So what's the success rate and what's the pros and cons to it? Why this vertical is becoming popular in this turmeric? Okay. Turmeric is a crop which required a very low sunlight. So जब आप उसको एक के ऊपर एक भी लगाते हो तो शेड लविंग क्रॉप है, उसको सनलाइट की वजह से फर्क नहीं पड़ता है. बट अगर उसी की जगह आप लेट्यूस लगा रहे हो और लेट्यूस को आर्टिफिशियल लाइट नहीं दी आपने, आपका लेट्यूस स्ट्रगल करता है. इवन आप अगर जो टावर की बात कर रहे हैं, समटाइम सन जो होता है एक साइड में होता है, दूसरा पौधा स्ट्रगल करता है, एंड इन द इवनिंग एक तरफ होती है और दूसरे तरफ का पौधा स्ट्रगल करता है. सो turmeric itself के लिए, because it is a shade loving crop, this multi-layer one is working fine. You can take an example of even the fodder. जो fodder hydroponic में grow किया जाता है, उसमें भी multi-layer करते हैं, because it is something of only 7 to 8 days का crop होता है, उसको harvest कर लेते हैं. So turmeric is doing good in that system because of that basic nature of shade loving crop. However, still I cannot conclude that what is the kind of a weight and all we can get from turmeric. My experiment is also means still not concluded. We got a 1 year crop. Second year crop we are not putting in a multi-layer, but we are putting in a rhizo bags. So still I cannot comment on how much it is successful or it is not. Maybe next year when we will meet, then definitely I can conclude that this I got. Baki, I don't know. Yeah. Okay. Thank you. Welcome, sir. Yeah. So the next question again is on a specific crop itself. So the person asks, what is the ideal way to grow cucumbers hydroponically, and what is the preferred EC and pH that needs to be maintained for? ECPS, समझ में आया? What you asked first? Cucumbers. What is the ideal way to grow cucumbers hydroponically? Yeah. इसका आंसर आई थिंक यू गाइस कैन गिव नाउ. मैं एक छोटा सा वो बताता हूं एंड देन यू गाइस कैन जस्ट आंसर दैट व्हाट इज द बेस्ट ग्रोइंग सिस्टम. The selection of different types of hydroponic growing system is directly linked with the root volume and roots oxygen requirement. So the crops which are in short duration with a less leaf area, with a less something kind of root volume are doing good in NFT, DWC, or even they are doing good in soilless also. Means even with growing media also it is doing good. However, if we talk about a vine crop, means long duration crop like all those crop, I will not name, otherwise the answer will be different. Okay. So all those crops which have a higher leaf area, higher volume of root and long duration, their oxygen requirement is, root oxygen requirement is always higher, and they are not performing good in water until and unless the grower can create a sufficient oxygen level. And specifically in Indian continent, the problem is high temperature, और जैसे ही पानी का टेम्परेचर बढ़ता है ऑक्सीजन का लेवल नीचे चला जाता है, and that's how these crops start struggling. किसी को means थोड़ा सा in benefit या result दिखता है, वो भी initial time में, but if we compare really what we are producing in soilless versus in these kind of NFT or DWC, always the soilless is going to perform better. So now answer, you got your answer that what is the best growing media for growing system for a cucumber?
Anyone can just tell? Any of you can tell me that what is the best growing system, hydroponic growing system for cucumber? Grow bags or maybe Soilless medium, sir. Absolutely soilless. And soilless also Parvati. Parvati is doing a good job in hydroponics. So Parvati, this Lika ball is also really a challenge for Indian continent. Yes, I am facing that, sir. Absolutely. So this is again a copy paste. So what is happening in Lika ball, the volume of moisture trapped in Lika ball is always higher. However, if I talk about single pore, the volume of water in every pore is always higher in Lika ball, in even Oasis cube. But if I talk about in a grow with this kind of soilless means cocoa peat growing media, the total volume of oxygenated water is much higher than these. And the moment temperature rises, the oxygen content in Lika ball, Oasis cube, or any other such growing media means deplete very fast, and because of that the plant start struggling, and it shows you the symptom of either salt injury or even the root rot. So yes, always focus on these long duration crop. The soilless growing media, cocoa peat is a well established, but you can also use any media which have two properties. One, inert, okay, means it cannot be digested easily, and it don't have a potential to supply any nutrient. And second, having a potential to hold a moisture, or moisture holding capacity should be higher. So any of the growing media, be it rice husk, even paddy straw, wheat straw, these all can be grown. Even sand is also, and sawdust also. These are the things which we all need to test and try to indigenize, get the indigenous growing media. So that's how you can enhance the system cost ko niche le jaake, the cost of production can go down. Yeah, go to next question. Yeah, so the next questions are related to climate. Yeah. So what in summer, what is the best ways to control the climate inside the polyhouse? I mean, if we have to do it manually, or if we haven't done, say, fan pad system. So this is one of the favorite something like topic. I can talk on this topic as much you want. See, it's a very simple thing. If we need to understand what is the source of energy or heat on the earth. Anybody can tell me what is the only source of heat or energy on the earth? I'm expecting an answer from somebody. Sun. Absolutely, Tushar. Only the solar light is having a potential to supply energy. And energy means what is this sunlight? Sunlight is a bundle of photons. Photons are energy. Energy ka bundle hai. So, question yahan pe aaya, how I can handle the temperature of my house? So my answer to that is very simple. Prevent the entry of sunlight inside your greenhouse. So do whatever you can. Like one of my project, I just put a rooftop shading. So what I'm doing, I'm just something like trying to curtail the entry of sunlight, because the moment sunlight will enter in your greenhouse, that will be absorbed on any surface and it will convert into a heat, and that's how the greenhouse is start getting warm or hot. And I invite everybody, maybe you guys can come down to Faridabad, one of the project where we insisted the vendor that put 75% shade net. And he
at the time when we were just installing that project, he came back 2-3 times. He said, sir, nobody is saying that this is an agriculture net. This is 75% shade net, never being used in agriculture. And he only installed when I given him an assurance that don't worry, what is going to happen? We need to replace this shade net. But put it, we will bear the cost. Because I was confident with the science. If I curtail the entry of sunlight in the greenhouse, I'm going to get a better crop, better temperature. So both the greenhouses are a fan and pad, one and other, where we have a 75% shade, we are getting almost 5 to 8 degree delta without any fan and pad system compared to the other one. So that's the way I can tell you. And bus, ek hi cheez rakhiye, you have to minimize the entry of a light inside your house. That will keep your structure cooler, and also very thumb or traditional way of keeping the temperature low. If you remember, during our summer, we used to go to our villages or rural or native places, and every evening we used to sprinkle water on the floor where we are planning to sit. So if you want to get a further impact, put a mister on the floor and operate that mister between 9 to 10 when the temperature is gradually rising. But yes, definitely put recirculating fan, so recirculate your air. So these are some of the basic principles by which you can keep your operating costs down without putting a fan and pad greenhouse and maintaining a better temperature during summer. Yeah. So coming back to the cucumbers question, so can you answer what is the ideal EC and pH that is required? Ideal EC pH किसी का होता ही नहीं है, हर project का अपना होता है. So it's a unique. Okay, my suggestion is only you start with 0.5, gradually increase and see the impact, because high EC have a potential to kill your plant, but low EC will only retard or reduce the growth. So start with 0.5, very minimal, and gradually increase and see the impact on your crop. And where you are not getting a significant improvement in your crop growth, that is the optimal EC. And pH is, yes, always slightly acidic side. Yeah. So the last question that we have. That's great. I was thinking that we are keeping everybody for a longer duration. It's a 1.5 hours. Yes. Yeah. So this is regarding jobs in hydroponic field. So if someone wishes to take a job in this field, where can they approach, or how do they go about it? What potential area we can target? I'm there. If you are really a good grower, then definitely there is a good number of jobs available in this sector. Okay. I would not suggest take it as a job, white collar job. White collar job is something like, if you want to do, maybe a project will start. You have to consider as a grower that project as your project and see you can do a wonder. Right now, I am operating something of around 11, 12 projects and operating as a doctor compounder model. And compounders are at the farm and they are translating my kind of instructions or prescription, and we are getting really a good crop. So job prospect is there, but only thing is ready to face the challenges, which is really a little tricky. Just only basic knowledge and very basic common sense. Believe me, you can do wonders. Yeah.
Yeah, I can see that some people from the audience as well are asking questions in the chat. So you guys can directly raise your questions. I mean, I think we can wrap it up in 10 minutes. Yeah, can we use a silicon? That means still this is a hazy question. I tried twice, but मैं personally engaged नहीं था. इस वजह से जो मेरे को feedback मिला है, there is nothing like significant impact because silica is one nutrient which is doing really good in water scarcity situation. But water scarcity आपका हाइड्रोपोनिक में होता ही नहीं. लेकिन सर अभी एक क्वेश्चन था कि इरिगेट करना है तो आपको रुक के या थोड़ा लीचिंग ना हो जाए इसलिए धीरे धीरे देना है, तो उसके साथ दे सकते हैं तो लीचिंग के बजाय वो पूरे अपने कोकोपीट में पानी पहुंचेगा ना. That's how I'm saying. Dharmen, I haven't something like yet concluded anything on this. So we all have to test it, validate it, and agar kaam kar raha hai, तो we need to share with everybody. ठीक है? So I'm not saying that it is not going to work. The only thing is I'm saying still I haven't concluded. मैंने जो किया था, मैंने डायरेक्टली नहीं किया था. My boys has done and they have given me a feedback कि भाई इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट था नहीं, और मैं तब तक किसी को नहीं बोलता जब तक मैं अपने से नहीं देख लेता, because that is a very important thing, because you are going to set a trend. तो इसलिए मैं तब तक नहीं बोलूंगा. Agree. Yeah. Where can we download this? Achha. Can we have a dedicated session for making of the hydroponic nutrients? See, nutrient पे definitely हमने तो 2-3 बार किया है. And whenever we just feel like I'm comfortable sparing another an hour with you guys for the success of this whole venture, the hydroponics. And already Dharmen has. सर मैंने शेयर किया है एक एक्सेल शीट. या मैं उसमें थोड़ा सा भी कुछ चेंजेस हुआ है, so I'll just something like share the another one. Because I keep updating these things. So I will share this. Where is that? People should get the right one. So master seed. So that means you are one of the. This is. Yes sir. आप एक काफी मतलब you are an active person to share all this information. What is happening here? Always happy to share. Yeah, that's always good. That's always good. क्योंकि बिना उसके तो मतलब बात बनती नहीं है ना. सही है. Yeah. So we all have to learn while sharing the information. Due to farmer sir. Yeah. So ये वाली आप शीट आप भी रख लेना. हो रहा है हाँ. ये वाली शीट आप भी रख लेना. आप ये मास्टर शीट जो अभी थोड़ी अपडेट की हुई है ना. Definitely. Yeah, share this one. So everybody who is looking for this sheet, it is already being uploaded in your chat box. So you can download that. And anytime you can reach to me, maybe my number is with everybody. You can get me on a LinkedIn, wherever you want. You can get me, and anytime you can reach to me. So again, thank you very much for means at least helping me to connect all those dots of knowledge, because knowledge is present in all the dots. But until and unless you ask a question, I'm not something like the process of connecting all those dots. So thank you for that. And it is a great learning for me also and for everybody. So let's make this hydroponic venture or initiative a great success.
government and everybody is getting attracted towards this one. So we need to do our bit, and that will be helpful for everybody. So thank you very much. Thank you so much for this insightful session, sir. Thank you. Thank you. It's a pleasure mine. Thank you, Samit. Thank you. Thank you, sir. Yes. Yeah, I think we can conclude it. Yes, Thank you. Yes. Yes. Thank you very much to you also here. You have done a lot of good job, huh? Chalo, then I'll leave